first of all, login into your Hmm. Yesterday, what we have seen is now how we can deserialize any of the JSON content and we can store it inside the Salesforce object. So with this program, what we did is we have parsed one of the JSON content. This was the JSON content that we have parsed, and with this content, we created one record inside your Salesforce account object. Now, instead of going with this lengthy program, what I told you is for deserialization, we have one of the class, one ready-made class is already available with the Salesforce, right? So what we can use is we can take the advantages of this system.json.deserialize class. With this, we can definitely convert this JSON format into Salesforce object data, and then we can store it inside the object. So the few things what we required over here is when we are using the system.json.deserialize method. So first of all, we require to give the JSON string. So as I have collected this inside one of the string variable, so I'm giving the name of that string variable over here. And then we should give on which particular format we wanted to make this conversion. Now because this JSON string we wanted to convert it into account, so I require to give the name as account.class. Okay, account.class. So because we wanted this string to be get converted into what? In the account record, in the account object record, so we are giving this name as account.class. This will by default going to return you s object data type. So we require to perform one of the thing called as explicit type conversion, and this we already have did in the bash programming as well. If you remember, whenever the start method sends the data to the execute method, whenever the start method sends the data to the execute method, that data was in the form of s object. So there we also require to perform something called as explicit typecasting, and we wanted to convert it from s object to our own data type. What data type? Account. Okay, and because this was just one record, so I'm storing it inside the account variable. That was the program. Now here here we are required to for example, here the second example, let me take the second example as well. So my second example over here is we wanted to deserialize multiple opportunity records. We wanted to deserialize what? Multiple opportunity records. There are more than one opportunity records that are over here, and then we actually require to what? Uh, we require to store them inside the opportunity object. So what I'm doing first of all is let me show you the string first of all. First of all, show you the string. What exactly is the string? So this is what the string is. This is the string is. Actually, this is the string. So I require to convert this. So let me first of all try to show you how does the string actually looks like to be. So let me show you that string first of all, so that you can understand. JSON opportunity one and then amount. Something like this. What's happening with this? Anyways, so amount and then the next is stage. Stage is prospecting, and then stage is lead source is web, and close date is this one, and then this is one of the record. This is one of the record, and after that record, the second record started from here. Second record started from here. So this is the second record. So let me first of all arrange it so that you could understand what exactly is the data that we are actually converting. So lead source, this is the second record. This is the second opportunity record, and this is the second record. This is the second JSON string. Now this is the third record actually. This one is the third record. So so in short, there are three different opportunity records which we have received in this JSON format, and we wanted to convert them into
opportunity records, right? That is what we wanted over here. That is what we want. So this is the JSON string. This one is the JSON string, and this we wanted to convert. This we wanted to deserialize so that we could convert it into the opportunity record. So altogether there are three records. Altogether there are three different records, right? So let's start with that program. So let me open the developer console, and yesterday we create a class called as JSON Parser class. This class, JSON Parser class, JSON Parser utility, right? This is the class what I created yesterday. So now let me create one more method for this. Public static and void. Let's give the name as parse account, parse opportunities, JSON. So with this name, I'm creating one of the method over here. This name, I'm creating one of the method over here. So let me first of all define that string opportunity JSON equals to, here I should give the complete string, right? Here I should mention the complete string. So I'm just copying it from here up to this. Up to this, I'm copying and then I'm pasting it inside this single inverted comma. Right? So this is my string. This is my JSON string that we require to parse. Now instead of going with that lengthy program, what I told you yesterday, we can take the advantage of one of the class, one of the ready-made classes there. What is that class? System.json dot create parser. Okay, system.json.create parser. Actually, first of all, I require to define this class. उसके बाद में फिर मैं deserialize जो method है वो करता हूँ. So here system.json.create parser, and then I first of all require to give the name of हमारी string का है. So our string is present over here. String is present over here. And when this is going to be get executed, when this is going to be get executed, so it's actually giving us the record. So system.json parser, and then create one of the object for that, like op parser. Okay. So first thing is like you require to create the object of JSON parser class that I already did. So with the name called as op parser, with the name called as op parser, I have created one of the object of JSON parser class. That's step number one. Here also we have done the same thing. Right? Chalo. So I first of all require to do this, and then after that, what I can do is like, let me directly go with that class. तो हमने जो कल पढ़ा है, क्लास जो हमने कल पढ़ा है, डायरेक्टली हम उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, and that is your I don't require this. इसकी जरूरत नहीं है because I am not actually parsing it. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. We don't require this. We can directly make a use of that. Yesterday program also I haven't used that. बराबर है. Parser की जरूरत नहीं है हमको, because if we are going with this technique, तब हमको इसकी जरूरत पड़ती है. Otherwise we don't require. We can directly use this method deserialize, of course. So I don't think this is required. तो system.parser की जरूरत नहीं है. We can directly deserialize this. How we can do that? चलो उसके लिए जो है मैं डायरेक्ट जो हमारी क्लास है उसको कॉल करता हूँ system dot json dot deserialize. ठीक है, system dot json dot deserialize. This is the method that I am calling. So when I'm calling this method, this method requires the JSON string. I have stored it inside this particular variable. So मैंने इसका नाम कॉपी कर दिया यहाँ पे. Okay, and then when it is converting, this particular JSON string को जब ये convert कर रहा है, so what actually it's generating?
what actually it's generating? It is generate because there are more than one record. There are more than one record. It's actually generating opportunity dot class. It's actually generating opportunity dot class. कल की केस में क्या था? It was account dot class, right? तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? It's actually generating opportunity dot class. It's actually generating what? Opportunity dot class. But I try to understand one thing. I can write down this opportunity opportunity dot class. Actually, I should write down this. ठीक है, जैसे कल के प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा? अकाउंट डॉट क्लास। बिल्कुल उसी तरह से आज के प्रोग्राम में मुझे लिखना चाहिए अपॉर्चुनिटी डॉट क्लास। लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक चीज को आइडेंटिफाई करो, वी आर नॉट प्रोसेसिंग जस्ट सिंगल रिकॉर्ड, वी आर नॉट प्रोसेसिंग सिंगल रिकॉर्ड। एक्चुअली वी आर प्रोसेसिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स है ना जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर प्रोसेसिंग मोर देन वन रिकॉर्ड, व्हाट वी रिक्वायर टू डिफाइन, वी रिक्वायर टू डिफाइन अ लिस्ट कलेक्शन। सो दिस शुड कन्वर्ट it into list of opportunity dot class. कल ऐसा नहीं था, कल ऐसा इसलिए नहीं था because we were only processing one record. What we were processing? That time we were actually processing only one record. एक ही रिकॉर्ड था अपने पास में, because there were only one record. तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसी हिसाब से मैंने अकाउंट डॉट क्लास लिखा। मैंने क्या लिखा? अकाउंट डॉट क्लास। बट आज आज की केस में, और हाँ उसका डेटा टाइप जो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन किया हमने वो भी अकाउंट में किया। बट आज जो हमारी केस है, we are processing more than one record of the data type opportunity. Opportunity के more than one record है। तो because we are processing more than one record, तो you require to give list of opportunity dot class. अब ये जो आपको रिटर्न करेगा, that will going to return it into what? Into S object data type. तो उसको आपको explicit type conversion करना पड़ेगा यहाँ पे। You require to convert it. Explicit type conversion आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो and we require to convert this into what? It's not returning us one record. It's returning us list of opportunity. So I wanted this to be get converted into list of opportunity. Okay, I wanted this to be get converted into list of opportunity and equals to here also list of opportunity. I'll give any name for that. For example, LST opportunities equals to this one. Okay. So this is how this is how we always make a use of deserialization process in the real time. ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक अ यूज ऑफ डीसीरियलाइजेशन। हमेशा जब भी हम करते हैं इसी तरह से करते हैं। तो व्हाट आई डिड, आपको हमेशा यूज करना है सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज मेथड। उसमें आप दीजिए सबसे पहले स्ट्रिंग जो आपकी स्ट्रिंग है एंड डॉट, बिकॉज आई कैन सी दैट स्ट्रिंग में एक रिकॉर्ड नहीं, इट्स कंटेनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ द डेटा टाइप अपॉर्चुनिटी। सो आई हैव गिवन लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी डॉट क्लास, और यही इसी से मुझे टाइप कास्ट करना है और यही मेरा रिटर्न टाइप भी रहेगा। ठीक है, once you have finished this, now we can print that data. अब हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। Before that, let's insert that. Insert what we wanted to insert. We wanted to insert this record. List of opportunities को मैं insert कर देता हूँ। After inserting, we can print it, or else I can directly find it over there. वहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे देख लेंगे। ठीक है, सो इतना सिंपल सा कोड रहता है, बस इतना कोड, ये इसकी जरूरत नहीं है। डोंट गो विद दिस, इसकी जरूरत नहीं है। हमें उसकी जरूरत तब पड़ती है व्हेन वी गो विद दैट लेंथी प्रोसेस, जब हम वो लेंथी प्रोसेस पे जाते हैं तब जरूरत पड़ती है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा कोड एक्चुअली कितने लाइन का है। कोड इज जस्ट ऑफ 3 लाइन कोड रहता है, बस इतना सी, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं रहता है। जिस किसी फॉर्मेट में, जिस किसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है जो भी आपका जेसन है, पहले तो आप वो जेसन स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ले लो। उसके बाद में सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज मेथड जो है, क्लास जो है, उसका डायरेक्ट यूज करो। ठीक है, और बस रिटर्न टाइप पे ध्यान रखो कि व्हाट इट्स एक्चुअली रिटर्निंग। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना है। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा डेटा है अपॉर्चुनिटी का, तो आई एम मेंशनिंग लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी डॉट क्लास। अब ये लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपने दे दिया, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपने दे दिया, यही आपका टाइप कास्टिंग है, यही आपका टाइप कास्टिंग है, और यही आपका रिटर्न टाइप भी है। यहाँ पर भी इस प्रोग्राम में वही सेम चीज थी। आपने दिया अकाउंट डॉट क्लास, तो अकाउंट ही आपका टाइप कास्ट है और अकाउंट ही आपका रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है और ये जस्ट 3 लाइन का कोड है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं होती है इसकी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग व्हेनेवर वी वांटेड टू डीसीरियलाइज। तो डीसीरियलाइजेशन आसान है, सीरियलाइजेशन में ये रिक्वायर टू कन्वर्ट एस ऑब्जेक्ट से उसको आपको कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में। दैट टाइम वी रिक्वायर टू लर्न द क्लासेस एज वेल, उसकी मेथड्स लर्न करना है। बट दिस इज अ लिटिल बिट सिंपल, दिस इज व्हाट सिंपल। अच्छा, सीरियलाइजेशन के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है कोई भी, बाय द वे।
जैसे सिस्टम डॉट जेसन डॉट डी सीरियलाइज है, ठीक है, सिस्टम डॉट जेसन डॉट सीरियलाइज नहीं है एक्चुअली। तो वो कन्वेंशनल तरीका जो अपना है जेसन जनरेटर क्लास का, उसी से जाना पड़ता है, राइट। चलो उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जेसन अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2 एंड अपॉर्चुनिटी 3 के नाम से रिकॉर्ड क्रिएट होगा। जेसन पार्सर यूटिलिटी डॉट पार्स अपॉर्चुनिटी जेसन एक्सपीरियंस। Let's go to the Salesforce, and when we go to the opportunities, so see these three records have been generated. JSON parser utility, JSON parser, JSON parser, JSON opportunity 1, opportunity 2, and opportunity 3. So these are the three records that have been from JSON content. Okay. So this is as simple as like this one. No, this is as simple as like this one. Let me take one more program, and then we are going to end this. I'll be starting something important by tomorrow. Okay. Okay. तो अब ये था, दिस वाज लाइक कि हमारे पास में रेडीमेड क्लासेस हैं, अकाउंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह, तब हम जाना। उसके अलावा मैंने आपको एक सिंगल कंटेंट है तो उसको कैसे पार्स करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है ना, वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आप वी कैन मेक द यूज ऑफ जेसन पार्सर क्लास एज वेल। ठीक है, अभी एक और एक रियल टाइम का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लेट्स कंसीडर दिस, लेट मी गो विद दिस। एक 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 एग्जांपल देता हूँ और उसके उसकी मदद से हम लोग डेटा पास करेंगे। पोस्टल पिन कोड एपीआई, this is one of the website, this is one of the website. What really happens is like, a, now for example you copy this URL and post it over। इस URL को मैंने कॉपी किया, one second। ये एक्चुअली कैसा है, दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये हम आगे चल के और आगे कंज्यूम करेंगे तब भी इसका लेने वाले। दो एग्जांपल लाइव में बताने वाला हूँ आपको, जिसमें एक है पोस्टल पिन कोड और दूसरा है वेदर मैप एपीआई। तो ये एक्चुअली क्या, इट्स अ काइंड ऑफ वेबसाइट जहां पर अगर आप इफ यू एंटर योर पिन कोड, है ना, इफ यू एंटर योर पिन कोड 4400, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, उसका पूरा रिस्पॉन्स देता है आपको। नाउ एज यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये जो डेटा है हमारा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये जेसन हमको मिलता है, इट्स अ रॉ रिस्पॉन्स, इट्स अ रॉ रिस्पॉन्स, राइट, इट्स अ रॉ रिस्पॉन्स। व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। तो अभी दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वेबसाइट, this is one of the kind of website where while using this API, while using this API, application program interface, while using this API, if you enter your pin code, यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना पड़ता है, तो it's going to give you the response, but now this response is in the form of JSON, right, and we require to pass this। अब इसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, मतलब we don't have any such object जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो this is a customized response, this one is a customized response। so let's understand how we can pass that also। तो उसके लिए मैं क्लास क्रिएट करूंगा और उसमें मुझे कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज लाइक, क्या हो गया यार इसको यार, एनीवेज। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी टू दिस, यहाँ पे नंबर ऑफ पिन कोड्स फाउंड, स्टेटस सक्सेस पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस नेम। तो या एक्चुअली माय जेसन कंटेंट इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम हियर, जेसन कंटेंट जो स्टार्ट हो रहा है ना मेरा, इट्स एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये इसके पहले का हेडर इन्फॉर्मेशन, समथिंग कॉल्ड एज हेडर इन्फॉर्मेशन। तो कितने 440024 जो डाला था मैंने, तो उसका स्टेटस है सक्सेस, और कितने मिले उसके रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड्स मिले उसके अगेंस्ट में। सो उसके अगेंस्ट में हमें 6 रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं। नाउ ये 6 रिकॉर्ड जो है, इट्स लाइक दिस, ये जो 6 रिकॉर्ड्स हैं, इट्स लाइक एक्चुअली दिस। यस, नेम, डिस्क्रिप्शन, एंड देन
branch, stop this, and then this delivery status, circle, district, डिवीजन. ये एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. सिटी, रीजन, ब्लॉक, स्टेट, कंट्री, and after country, pin code. So this is the first response. See, ये first response है, ठीक है. Now to represent the first response, how many variables are there? How many fields are there? Name, description, branch type, delivery status, and a circle. The same way, there is second response as well. Total 6 responses हैं यहाँ पे. There are total altogether 6 responses. 6 responses are there. So you can pass that. You can see that कि ये इस तरह से दी गई ना का. And then description, branch type, delivery status, circle, district, division, region, block, state, country, pin code. So this is what? This is the second response. Now in the same way, this third response. So this is how you are getting the responses. तो real time पे देखो इस तरह से responses आते हैं कि हम लोग API hit करते हैं. This is something we call this as to be जब API, जब आपने ये particular URL कॉपी करके पोस्ट करके यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे अपना पिन कोड डाला. So इसको बोलते हैं API hit करना. This is something called as API को hit करना. अब जब API hit होती है, जब एपीआई हिट होती है तो वो आपको रिस्पांस देती है. तो रिस्पांस किस फॉर्म में आया? दिस रिस्पांस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन. नाउ दिस इज अ रॉ रिस्पांस. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रॉ रिस्पांस. इसको मुझे प्रोसेस करना है. आई वांटेड टू प्रोसेस दिस और फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा. ठीक है, ठीक है. उसके बाद फिर मैं इसे कन्वर्ट करूँ. तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल है कि किस तरह से एपीआई हिट होती है और किस तरह से रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं. तो मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूँ रियल टाइम के. एक मैं ले रहा हूँ पोस्टल पिन कोड एपीआई, और अभी हम जिसको कंज्यूम कर रहे हैं. कंज्यूम करने मतलब जब व्हेन वी आर गिविंग दिस, हमने जब ये एपीआई हिट किया तो ये रिस्पांस हमें मिला, दैट वी आर कंज्यूमिंग. आगे चल के हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर ओन एपीआई. एपीआई हम खुद ही कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन कंज्यूम द एपीआई. तो दिस इज द रिस्पांस व्हाट वी हैव गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. और ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है ऑब्वियसली. दिस इज अ थर्ड पार्टी, राइट. दिस थर्ड पार्टी वेबसाइट. इट्स बिल्ट अप ऑन दी जावा. ये जावा पे बनाया हुआ है. नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दैट रिस्पांस. जो ये रिस्पांस हमें जनरेट हुआ है उसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं सेल्सफोर्स पे. तो अब इस रिस्पांस के लिए मैं क्या करूं? बिकॉज दिस इज समथिंग आई डोंट हैव एनी सच ऑब्जेक्ट. एनी, मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना जिसमें ये सारी फील्ड्स अवेलेबल है, नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐसा. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक आई क्रिएटिंग माय ओन क्लास फॉर दैट. आई विल बी क्रिएटिंग माय ओन क्लास फॉर दैट. और उस क्लास के अंदर मैं ये सारे मेंबर्स लूंगा. नेम, डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल, दिस ऑल विल बी गोइंग टू बी द वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट. उसके बाद फिर मैं पार्सिंग करूँ. उसके बाद मैं पार्सिंग करूँ. तो for that let me create one class, one separate class for that, and that class will be USTL, postal branch branch details. ठीक है, postal branch details. So I'm creating one of the class for that. एक अलग से एक customized class में बना रहा हूँ. ठीक है, that class name is postal branch details. और इसके अंदर फिर मुझे सारे जो वेरिएबल्स है वो बनाने पड़ेंगे. सो पब्लिक, हाँ, लेट मी नाउ शो यू. तो जैसे पहला वेरिएबल है. अभी आप एक चीज समझो कि ये जितने भी की नेम्स है, ये दिस इज गोइंग टू बी माय वेरिएबल. ये जितने भी यहाँ पे की नेम्स है, जितने भी कीज नेम है, ठीक है, जितने भी की नेम्स है दैट आर गोइंग टू बी माय वेरिएबल्स. तो की नेम्स आर ऑलवेज स्ट्रिंग. जेसन में हम ये जानते हैं वैल्यू वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो वैल्यू हो सकती है नंबर भी हो, तो एक अलग बात है. लेकिन एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि जितने भी की नेम्स हैं दे आर ऑलवेज स्ट्रिंग. दे आर ऑलवेज स्ट्रिंग. दे आर ऑलवेज स्ट्रिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक पब्लिक स्ट्रिंग, public string, 1 second. Ah, public string. The first variable over here is like name. The first variable is name. So let me copy this name. Name. Okay. This is my first variable. And then second, public string. The second one is description. Okay.
सो बिकॉज देयर वर नो सच क्लासेस, तो मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ। जैसे अकाउंट नाम की तो क्लास है, अपॉर्चुनिटी नाम की क्लास है, तो मैं डायरेक्ट पास कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं है, इसलिए मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज क्लास नहीं है इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये क्लास के अंदर ये सारे मेंबर रहेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग, द थर्ड इज ब्रांच टाइप, ठीक है। नाउ सी दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल, ये बिल्कुल एक रियल टाइम एग्जांपल है, जहां मैंने एक वेबसाइट पर एक एपीआई को हिट किया, और जब मैंने उस एपीआई को हिट किया तो उसने मुझे एक जेसन रिस्पांस दिया है। नाउ आई एम इंटेंडेड टू पार्स दैट पर्टिकुलर जेसन रिस्पांस। तो वो जेसन रिस्पांस को मुझे पास करना था, इसलिए मैंने 6 रिस्पॉन्सेस आए, तो फिर मैंने उसके लिए पहले एक रिस्पांस को अलग किया, और फिर मैंने ये देखा कि इसमें कितने वेरिएबल्स है एक्चुअली, है ना, कितने वेरिएबल्स है। अब जितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जितने यहाँ पे कीज है, जितने भी वेरिएबल्स है, जितनी भी कीज है, उसके हिसाब से मैं इस क्लास के मेंबर्स, ठीक है, इस क्लास के अंदर उतने वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इट इज डिवीजन, ठीक है, आफ्टर इट इज डिवीजन, एंड देन public string after division it's region, and then public string after region it's block, public string after block it's state, and then public string it's country, and after country public string pin code. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 parameters, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, so there are 12 parameters. Spelling of public was wrong, that's why this error was coming. ओके, ठीक है। सो अब मैंने क्लास तो बना लिया है ना, आई क्रिएटेड द क्लास, चलो क्लास तो बन गई है। तो अब क्लास बन गई है, क्लास के मेंबर्स भी बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वी विल रिक्वायर टू डीसीरियलाइज दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो हमारा कंटेंट था उसको डीसीरियलाइज करेंगे, ठीक है। लेट मी सेव दिस, लेट मी सेव दिस, ओके, चलो। तो आई एम गोइंग बैक टू दिस जेसन पार्सर यूटिलिटी में वापस चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं एक नई मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट, एंड गिव द नेम एज लाइक पार्स पोस्टल डिटेल्स जेसन, ठीक है, पार्स पोस्टल डिटेल जेसन response, ठीक है। with this name I'm creating one of the method, with this name I'm creating one, ठीक है। चलो देखो एक चीज समझो, when you are using opportunity, when you are using opportunity, the opportunity is a class that is already created, ठीक है, ओके। when you are using account, तो account is a class that is already created, हमको अकाउंट थोड़ी ना अलग से क्रिएट करना है। when I'm deserializing this content, when I'm parsing this content, and I wanted this to be get converted into account, तो डिड आई रिक्वायर टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एज अकाउंट क्लास? आप थोड़ा सोचिए, एक पल को सोचिए और मुझे बताइए, क्या हमें अकाउंट क्लास क्रिएट करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड क्लास, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। व्हेन वी आर पासिंग दिस कंटेंट इनटू अपॉर्चुनिटी क्लास, तो क्या हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है? डू वी रिक्वायर टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। बट व्हेन वी आर पासिंग दिस कंटेंट, व्हेन वी आर पासिंग दिस कंटेंट, एंड एक क्लास है हमारी जैसे पोस्टल ब्रांच डिटेल, जिसमें सारे ये होना चाहिए, तो डू वी रिक्वायर टू क्रिएट द क्लास और नॉट? आपको अगर ये क्लास जो है ये पहले से मौजूद नहीं है, विथ ऑल दीज वेरिएबल्स, दिस क्लास इज नॉट प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड, ये कोई स्टैंडर्ड क्लास थोड़ी ना है। एंड दैट्स द रीजन आई क्रिएटेड अ कस्टम क्लास फॉर दैट, एंड दैट्स द रीजन आई क्रिएटेड अ कस्टम क्लास फॉर दैट। और अब मैं इसको यहाँ पे अपना जैसे यूजुअल जो अपनी प्रोसेस है उसी प्रोसेस में ला रहा हूँ, जैसे यूजुअल प्रोसेस है अपनी वही, ठीक है। क्या करते हैं हम, वी डिफाइन वन ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल, we define one of the string variable, so inside this one string
For example, BRANCH branch details, ठीक है. I'm defining one of the string variable branch detail JSON equals to, ठीक है. I'm defining one of the string variable और उसके अंदर मैं पूरी string लेके आऊंगा. So my complete string is this. This is my complete string. This is my complete string. Okay. So I'm copying it and I'm actually pasting it over. I'm copying and I'm pasting it over. ठीक है. This is my complete string. ये मैंने copy किया और this I have pasted over. चलो. इसके बाद when you have done this pasting, when you have done this pasting, here from here you required stuff. नेम से लेना पड़ेगा. ठीक है. तो उतना सामने का जो पोर्शन था हेडर पोर्शन दैट आई हैव रिमूव्ड नेम से लिया. ठीक है. सो आफ्टर दैट वंस यू हैव डन दिस, चलो उसके बाद में क्या करना है हमें. हाँ, हमें क्या करना है. वी रिक्वायर सिस्टम डॉट जेसन डॉट बीसी. ठीक है. एज यूजुअल जो मेथड हमेशा यूज कर रहे हैं वही मेथड. गिव द जेसन स्ट्रिंग. गिव द जेसन स्ट्रिंग. योर जेसन स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड दिस वेरिएबल. इसको दो. अब इसे कन्वर्ट किस में करना है. इसको आपको जो कन्वर्ट करना है, इसको आपको बेसिकली कन्वर्ट किस में करना है. ठीक है. यू वांटेड दिस टू बी गेट कन्वर्टेड विद दिस, है ना. अभी अभी यहाँ पे क्लास का नाम डॉट क्लास. तो क्लास का नाम क्या है. सिस्टम नहीं है. क्लास का नाम क्या है. डॉट क्लास. तो कौन सी क्लास है. तो आई जस्ट नाउ क्रिएट अ क्लास पोस्टल ब्रांच डिटेल्स. देखो तो POSTL पोस्टल BRANCH ब्रांच डिटेल्स. ठीक है. पोस्टल ब्रांच डिटेल्स ये है मेरी क्लास. लेकिन यहाँ पे एक एक डेटा थोड़ी ना है. आपने देखा कि रिस्पांस में आपको एक से ज्यादा डेटा आया हुआ है. तो एक से ज्यादा डेटा आया हुआ है जैसे पिछले प्रोग्राम में था, बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ भी करोगे. सो यू विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. यू विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ठीक है. तो वही और यही आपका दिस लिस्ट कलेक्शन वुड बी योर टाइप कास्टिंग एज वेल. और यही आपका रिटर्न टाइप भी रहेगा. तो आपको इसे टाइप कास्ट करना है. टाइप कास्ट में भी आपको यही देना है. ठीक है. टाइप कास्ट करते वक्त भी आपको यही देना है. और उसके बाद में फिर इसका जो आप इसका रिटर्न टाइप रहेगा, इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा उसमें भी आपको यही देना है. लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड गिव एनी नेम लाइक LST ब्रांच रिजल्ट्स. ठीक है. लाइक दिस. लेट नाउ सेव दिस कोड. ठीक है. लेट नाउ सेव दिस कोड. गो टू दिस एंड. इसके बाद में अब बिकॉज ये डेटा कहीं स्टोर नहीं होगा तो मैं इसको प्रिंट कर लूँ. लास्ट टाइम जो है हमने इसको इंसर्ट किया था बट अभी हम इसको इंसर्ट नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट. सिस्टम डॉट debug and branch details equals to plus this particular collection. ठीक है. I'll be printing this particular collection. ठीक है. चलो. So let's execute this particular program and let's see what happens. So let me copy this class postal and let me execute this. So this is what your details. This is what your. अब हम what we can do is like अभी तो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है पूरा एक ही बार में. in the coming days I will be creating one of the program. मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं VF पेज को भी इंक्लूड करूँगा. और VF पेज में मतलब what we will be doing is like in the coming days मैं एक प्रोग्राम बनवाऊंगा. and in that program what I will be doing is like let me tell you that कि मैं क्या करवाने वाला हूँ. अभी उसका समझ लो कि थोड़ा सा पोर्शन जो है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन आपने सीखा है. तो अभी हमने क्या किया बेसिकली हमने वेब सर्विस को हिट किया है ना. दिस वी हैव सीन कि हमने वेब सर्विस को हिट किया. वेब सर्विस जो है वहाँ पोस्टल पिन कोड की जो API उसने हमें रिस्पांस दिया. हिट कैसे किया. आपने URL की मदद से हिट किया उसको और फिर उसने आपको रिस्पांस दिया. तो आपने फॉर एग्जांपल अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि आगे चल के जब मैं आपको APIs क्रिएट करना सिखाऊंगा
कल से मतलब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक विजुअल फोर्स पेज बनाएंगे जहाँ पे वी विल आस्क द यूजर टू एंटर दिस पोस्टल पिन कोड, और वो पोस्टल पिन कोड ना मैं यूआरएल के फॉर्म में इस एपीआई को दूंगा। अब ये जो रिस्पांस आया है उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कितना रिस्पांस आया, जैसे 6 रिस्पांस आया है, अयोध्या नगर, दिगोरी, है ना, ऐसा जो रिस्पांस आया तो वो पूरा मैं टेबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो दिस वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग फ्यूचर। दैट टाइम ऑल्सो वी विल बी गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एपीआई। आज जो हमने हिट किया ना वही एपीआई हम पोस्टल पिन कोड एपीआई का यूज तब भी करेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज लाइक हाउ वी कैन इवन पास द कंटेंट दैट आर नॉट देयर इनसाइड द सेल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा, तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ कस्टम क्लास। एक क्लास बनाओ, एक क्लास बनाओ। जैसे आपके ये रिस्पॉन्स है तो इसमें जितने भी कीज हैं, आपकी जितनी भी कीज होती हैं, ठीक है, क्लास बनाओ सबसे पहले आप। और जितनी भी यहाँ पे कीज होती है, नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करो, उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे बना के रखो। तो एक बार आपकी क्लास बन गई है देन यू कैन डायरेक्टली डीसीरियलाइज दैट। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली डीसीरियलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज एज गुड एज लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी डॉट क्लास, लिस्ट ऑफ अकाउंट डॉट क्लास। क्यों? क्योंकि दैट अकाउंट अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी देयर। अकाउंट अपॉर्चुनिटी पहले से था, पोस्टल ब्रांच डिटेल नाम से कोई क्लास नहीं थी। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्लास बनाया और उसमें वो सारे वेरिएबल रखे जो आपको रिस्पॉन्स में दिख रहे हैं। बिल्कुल यही तरीका होता है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ जैसे एक्चुअली रियल टाइम, एकदम रियल टाइम का तरीका सिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। रियल टाइम पे जब भी हम एपीआई हिट करते हैं तो पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं एक बार कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से जैसे ये रिस्पॉन्स आता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई रिस्पॉन्स, तो उसके हिसाब से फिर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी एक कस्टम क्लास बनाता हूँ, उसमें वो सारे वेरिएबल्स रखता हूँ, और फिर उसके बाद में डीसरियलाइजेशन परफॉर्म। ठीक है, डीसरियलाइजेशन परफॉर्म करता हूँ। तो अभी जो हमको रिजल्ट मिला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ये ऐसा मिला हुआ है लंबा, बट पूरा मिल गया, पोस्टल ब्रांच डिटेल्स है ना, पूरा आया हुआ है, ये पूरा आपका आया हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो, तो इसको फिर आगे में देखेंगे हम थोड़ा सा इसके आगे में अब दूसरे तरीके से इसी चीज को पढ़ने वाले। सो इन नेक्स्ट लेक्चर what we are going to start something called as http classes. What we are going to start something called as http classes. ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, वी विल बी मेकिंग। अभी तो हमने कंज्यूम करना सीखा, अभी हमने कंज्यूम करना सीखा, अभी हम एपीआई क्रिएट करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलो उसके पहले हम थोड़ा सा एचटीटीपी क्लासेस को समझेंगे और उससे भी रिस्पॉन्सेस को कैसे फिल्टर आउट करना वो देखेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग कॉल्ड एज एचटीटीपी क्लासेस। प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑन दिस प्रोग्राम, दिस इज वेरी एसेंशियल।